So Madhurima, did you save your life by watching those short videos? Good evening, sir. Yes, I So, have seen those two videos, but for once, not multiple times, because today I took an interview with a friend. beautiful Uh, prolongation. Beautiful uh, prolongation. Once again, once again. interview with a friend, so I couldn't see the videos multiple times. Okay, no problem. So now everyone think about the message of that video and write one line in chat. What is the message of these two videos? What are they trying to say? In one line. Acha, other than Madhurima, who else has seen it? Please raise your hand using the interface. Dhruv has seen it. Anybody else? Okay, Yatharth has seen it. Sanjay has seen it. Okay, okay. Yeah, Rajat also has seen it. Good. So, Sanjay Ojha, what is VSM, this technique they are talking about? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सर इसमें जैसे हमें जैसे अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है और देखना हमारे विजुअल क्यूज क्या है मतलब हम जैसे बोलते हैं तो हम आंखें कैसी लगाती हैं जैसे उस वीडियो में था जैसे वो पीछे जाते हैं जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसके आँख मतलब सामने वाले की आंखों में देखते हैं या नहीं देखते मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है मतलब हम विजुअल क्यूज हमारे कैसे हैं बात करते वक्त राइट राइट, बिल्कुल ठीक। ध्रुव ने जैसे लिखा है कि वी कैन grow change by becoming aware of ourselves and seeing role models, watching ourselves or others. बहुत अच्छा बताया ध्रुव ने। So essentially what these two videos are about is this, that आप अपने अंदर जो नया व्यवहार लाना चाहते हैं उसको पहले मॉडल करिए और उसको रिकॉर्ड करिए और रिकॉर्ड करने में उसको देखिए। सो व्हेन यू सी इट योरसेल्फ ऑन द वीडियो तो आपको समझ में आता है कि कब कहाँ पे कैसा हाव भाव मुझे उस दिशा में ले जाएगा जिस दिशा में मैं जाना चाहता हूँ। तो सेकंड वीडियो में जो है सो मधुरिमा, द सेकंड वीडियो, व्हाट डज इट convey, what is the story behind it? And you can use bouncing and prolongation, and you should actually use it because this is the right place for doing things like that. So what is the story behind this second video? Yes, sir. Bouncing, like I feel that bouncing is a very tough thing for me to do. Yes, but I will try. Okay, so I want to tell you one thing. I want to tell you one thing. All of us here were born not to attempt easy things. We were not born to eat rasgulla. All of us were born to do difficult things, very okay. difficult things, right? So don't worry about this being difficult. No, you can do it. Yeah, go on. Yes, so as that video was talk, talking about the VSM, uh, which is that the behavior we want to see in ourselves, we need to practice that behavior more so that our brain can um,
so that our brain can capture that behavior. And when we are like when we need to do that in our real lives, uh, so when we need to do that in our real lives, our brain can give the ray ray response quickly, like that I understood from that video. Very good. Watch this recording afterwards and see how you were speaking first time and now how you are speaking this time. One thing which is very clear to me straight away, that because you are speaking loudly, you are sounding so much more effective and clear. Thank you. Now let me invite Vikas Ranga. Vikas, in the second video where this autistic child is being taught a behavior through the video, would you like to add something more to explain that or to highlight something from there? सर माई बैड मे भी मैंने वीडियो देखना मिस का कर दिया तो इसलिए आज औरों को मौका दिया जाए उनके बारे में बताने का. थैंक यू. Anybody else want to add something more to what Madhurima has said, especially from the second video where autistic children are being taught behaviors like looking, turning towards, responding to. If somebody says good morning, then how you turn and then you look into their eyes and then you say good morning. So did you notice anything there? Dhruv or anybody who has seen that video? हाँ, somebody raised hand. Yes, रजत. हाँ, बोलिए रजत, बताइए. सबसे पहले तो गुड इवनिंग सर. सर आज की जो वीडियो थी उसमें मैंने देखा कि पहली बार दूसरी बार जब लास्ट में देखा कि उसकी जो आई थी उसका कुछ मूवमेंट अलग था, और जो मुंह था जब जैसे जो वो ऑटिज्म वाला जो वो बॉय था वो रिएक्शन दे रहा था, तब उसकी जो एक जब हाव भाव से ही ये मालूम चल गया था कि ये हाँ बोलना चाह रहा है. मतलब उसकी आई ब्रो ऊपर आ गई थी, एंड आई कांटेक्ट ज्यादा मैच उसका खा रहा था, एंड उसका अचानक से जो वो सिर था वो पीछे हो गया था सर. और सर इसकी जो बाद में है वो मतलब ब्रेकडाउन स्किल वाला है कि सपोज करो हम यदि किसी से बात करना चाह रहे हो और यदि हम दोनों के अपोजिट हैं, तो सबसे पहले तो अपन उसकी ओर दौड़ेंगे, फिर उसको देखेंगे और फिर उसको मतलब हेलो बोलेंगे. और फिर सर इसके बाद में जो पॉइंट था वो नेचुरल एनवायरनमेंट, जो आपको उस तरह का एनवायरनमेंट दिया जो उस चीज को लिए एक व्यावहारिक और एक प्राकृतिक है. और लास्ट पॉइंट है सर जो पॉजिटिव बिहेवियर, जैसे कि जो भी कोई मेंबर अच्छा काम कर रहा है तो हम उसके व्यवहार को या उसके अच्छे काम को त, 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 तारीफ यदि हम देंगे तो वो एक अच्छा फील करेगा, तो फिर वो ऑन एनकरेज होगा सर. और लास्ट में एक टाइम में एक स्किल सर. थैंक यू सर. थैंक यू रजत, बहुत अच्छा बताया आपने. तो एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो रजत ने हाईलाइट करी और वीडियो में भी है, आप देखना कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को वो छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं. यू ब्रेक डाउन ए बिहेवियर इन स्मॉल मॉड्यूल्स so that the child can learn and practice it and understand it. That is what we can also learn from the same video. Though I must tell you that there's no similarity between autism and stammering, very superficial. Autistic children have got a different problem, different issues, and autistic problem are much bigger than stammering. So there is no real comparison, but I still thought it could be relevant for us to learn from them because they also have got a problem of eye contact.
in autism, the biggest problem is they cannot relate to other people. So they live their own life very, very secluded and they live in their own head. So, so we can learn this thing, that how a autistic child is taught to develop eye contact and to develop social behavior. So social behavior will have everything in it. For example, turning your body towards the person you're going to talk to, maintaining eye contact, saying something in response, all those things. So in the same way, we stammerers can also look at our video and look at other people's video also and see what they are doing. And if it is good for us as well, then we can break down that behavior into smaller modules to understand and practice. So for example, if you like a lecturer of yours, if you think that this lecturer, I love him, the way he presents his topic, then try to understand, why do you like him? What is good about his presentation? Is it because he stands straight? Is it because he looks at everyone? He takes turn to maintain eye contact with every student? Is it because he asks questions and pays respect to your intelligence also by asking questions? So when you analyze his behavior, his skills, then you will be able to find those smaller modules which you can practice and learn one by one. So that is the whole thrust of these two videos. So let me sort of put the whole thing together once again, that VSM basically means that whatever behavior you want to develop, you should model it in front of camera and then look at the recording, understand the behavior, fix it in your head that, okay, this is how I should be looking when I'm going to, when I'm going for a job interview. I'll give you one more example. Suppose you come to know that for a particular high pressure interview or high powered interview, suppose you are going to give a job interview to some big government post, and you know that the standard there is to always wear a tie. So an average man probably will buy a tie before the interview, but a smarter man will take the tie out, put the knot and everything much before the interview. Maybe 3 days before the interview, he will put the knot, do this thing. And a really smart man will put the tie on, dress formally as if he's going for the interview, and he will record himself while talking in that formal dress, and then look at the recording. Average people will not do all this thing. They'll simply put the tie on that particular day, go for the interview, and throughout the interview, they'll keep on touching their neck. And afterwards, they will say, यार मैं ठीक से बात नहीं कर पाया, मेरा दम घुट रहा था, आज मैंने पहली बार टाई पहनी है. So so इसीलिए VSM is important for that reason, that whatever behavior you want to present, you should model it, review it, break it into pieces, and practice it. So does anyone want to add something to this message about these two videos about VSM? अच्छा, एक बात और जानना मांगता हूँ किसी से भी. फर्स्ट वीडियो में वो बंदा जो बात कर रहा था, वो कौन था? वो उसका बैकग्राउंड क्या था? Does anyone remember? Yeah, he was a pastor. I'm not able to pastor. Pastor, yes. तो Pastor in church. पास्टर का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? पास्टर का मतलब क्या होता है? Pastor is someone who teaches the teachings of the Bible to the children on Sundays and Very, maybe some other days. Yeah. very correct. Arjun, do you know the origin of pastor? No, sir.
I don't know the Acha. origin. Acha, I'll tell you. Even though I'm not a Christian, but I've read about these things. So, pasture word comes from pasture. Pasture का मतलब चरागाह, where cattle go to graze. And the man who takes the charge of all these cattle is called pastor. So a Christian priest is like that man in charge of his herd. If a tiger comes to attack the cow, it is the pastor who will take the stick and chase the wild animal away. So pastor is in a sense is the caretaker of his group of followers in a church. So from that word has come pastoral duties, pastoral, pasture. Beethoven has written a symphony about, it's called Pastoral Symphony. Pastoral Symphony, I think it's symphony number 3 or 4. So from that, this word has come, pastor. So this man who is a stammerer, he's a pastor, meaning he is a padri in a church. And a padri in a church has got a very important and regular function is open the Bible and read. So he'll be opening the Bible and say, today we are going to read Matthew chapter 3, verse 49. And then he has to read the word. He cannot change the words. Now you see his biggest problem. उसको रोज चर्च में जाके पढ़ना है बाइबल से, एक भी वर्ड को बदल नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता, छोड़ेगा तो उसके जो उसके जो ग्रुप में जो लोग हैं, उसके कॉन्ग्रीगेशन में जो लोग हैं, वो कहेंगे अरे पादरी साहब ने हमारी बाइबल का वर्ड बिगाड़ दिया. So he cannot do that. He has to say the exactly same word. So and he wants to, so therefore he wants to learn to deal with this stammering, and he is using VSM to learn to deal with stammering. And you also are using VSM. आप लोग भी VSM यूज कर रहे हैं? कैसे? Yes, sir. Can I say like how I am? Yes, sir. So first of all, I am practicing this posture thing while sitting. Like I have this habit of slouching, when I sit. Yes. Yes, so I try to keep my spine straight while sitting, and also I am trying to maintain eye contact while talking, and mainly when I get stuck during the conversation. Yes, so that's for me. Okay. So all of us, I mean, all of you are making your videos and you're looking at them. I am hoping that you're looking at your own video also. That's very important. That even before you submit the video for our review, you should definitely look at your video a couple of times. And even 6 months later, you can look at your video, and I tell you, you will be benefited by that. So when you're looking at your video, this is what you should be looking for. That what are the things which I'm doing well? Am I slouching like this? Am I sitting straight? Am I opening my chest by pushing my head back? Because when you bend your head down, your chest gets closed, gets compressed. So paying attention to your facial expressions, when you're stammering, do you look up or do you look down? My name is Satyendra. Or do you say, my name is Satyendra? So what kind of expression you are using and which one is working for you? That you can find out by looking at your videos. So keep on looking at your videos. 3 days later, 3 weeks later, whenever you get time, go back to your YouTube channel and watch your video. And pay attention to the things which you are doing well. If I put on a good shirt and it's looking good on you, then make
Make a note of that. That is how I should be dressing when I go for a proper formal interview. Okay, so Sanjay, and now and in the next round, acha, one more thing I want to ask everyone. Did anyone watch that video which I shared in the group about from one Dr. Levine about shame? Please raise your hand in the interface. Okay, Sanjay has seen. Sanjay Ojha, the two Sanjays. Okay, so let me start with Sanjay Kushwaha. Sanjay, what do you remember from that video? What was special about that video? What was it talking about? हाँ हेलो सर am I audible? Yes. Okay, so good evening. तो उस वीडियो में लाइक फर्स्टली उसमें बताया है कि जो सैम है और जो गिल्ट है उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन लाइक यही है कि पास्ट में हमने कुछ जो भी एक्टिविटी की है और उसको लाइक किसी ने भी बोला है कि ये ठीक नहीं है, यू नीड टू ओवरकम दिस, और उस चीज का मजाक उड़ाया है। तो एक रीजन ये हो सकता है। और और दूसरा लाइक ये है कि जो ट, 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 ट्रॉ- हाँ, ट, 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 ट्रॉमा जो हमारी लाइफ में हुआ है, तो उस ट्रॉमा की वजह से वो जो एक्टिविटी है वो उसका स्टेम का रूप ले लेती है। तो हाँ, ये मुझे याद है कि उसका रीजन क्या है, बट उसमें जो ओवरकम करने का तरीका वो मैं थोड़ा समझ नहीं पाया था, like, किस तरह कोई बात नहीं, ठीक करना है, है। ठीक है। I'll go to Sanjay Ojha now. Sanjay Ojha, can you add something to what he has already mentioned? सर जैसा उस वी 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 वीडियो में बताया था कि जब हम शेम फील करते हैं तो हमारी बॉडी क्लोज हो जाती है। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मैं जब ग्रुप में बात कर रहा होता हूँ तो मेरी बॉडी बहुत क्लोज होती है और मैं थोड़ा क्लोज्ड रहता हूँ और इस स्पेस भी कम लेता हूँ। लेकिन जैसे ही हम थोड़े अपने शोल्डर ब्रॉड करते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी को एक्सटेंड करते हैं और हम काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं, जो कि शेम का पॉजिटिव प्राइड है वो हम फील करते हैं। और ये मैंने फेक करके भी देखा है, तो टेम्पररी ऐसा फील भी होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे खुद याद आता है कि सालों पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया था, उस जमाने में रैगिंग बहुत भयंकर होती थी। तो वो रैगिंग के शुरुआती जो 2-3 महीने, उन 2-3 महीने में मेरा मेरा बॉडी ऐसे हो गया था ऑन ए परमानेंट बेसिस। आई वॉज गोइंग अराउंड शोल्डर्स स्टूप्ड, गर्दन नीचे, हमेशा डर। तो ये जो उसने कहा है, उसने एकदम सच कहा है कि शेम लिव्स इन योर बॉडी। दिमाग में नहीं, ऐसा नहीं कि दिमाग में सीमित है, वो मन में सीमित है, यादों में सीमित है, नहीं, बल्कि इट लिव्स ऑन इन योर बॉडी, इट अफेक्ट्स योर एंटायर बॉडी। वो बदन में गांठ बन के जगह जगह फैल जाती है, और इसलिए उसको पूरे बदन से बाहर निकालना बड़ा जरूरी है। उसके कुछ तरीके उसने बताए हैं। खासतौर पर उसने जो मेथड एक्सरसाइज बताई वो यही है कि किसी से बात करते हुए हम इसको रोल प्ले करें। कि जैसे मैं संजय से बात कर रहा हूँ और संजय ने मेरा नाम पूछा, और मैं एक्चुअली उसको रोल प्ले कर रहा हूँ कि मेरा नाम स स स सत्येंद्र है। अब यहाँ पहुंच के अब मैं फिर से इसको रिवर्स करता हूँ।
अनब्लॉक करता हूं। अब मैं धीरे धीरे अपना सर उठा रहा हूं, और उठाते हुए मैं अपनी चेतना को अंदर ला रहा हूं कि मेरे बदन में जो क्या बदलाव हो रहे हैं। आई एम बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ योर बॉडी। क्योंकि अभी जो पहले जो हुआ है वो अनकॉन्शियस था। किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, सत्येंद्र, ये अनकॉन्शियस था। नाउ यू बिकम कॉन्शियस एंड यू रिवर्स इट बाय straightening your head and then opening your chest, and then you feel inside your whole body that your body has expanded. There's more air inside your chest, and you are visibly taller, you are visibly confident, you are visibly stronger. And then you are saying, my name is Satyendra, holding your head high. ये सिंपल सी एक्सरसाइज उसने करने को बोली है। उस वीडियो को 2-3 बार और देखिएगा आप लोग, और इस बात को समझिएगा कि वो बड़ी गहरी बात बता रहा है कि शेम कहाँ से कैसे आता है। एसेंशियली उसका मैसेज सिर्फ ये है कि इंसान हमेशा ग्रुप में सरवाइव कर सकता है। एक इंसानी बच्चे को अगर जंगल में पैराशूट से ड्रॉप कर दिया जाए तो वो बचेगा नहीं। तो ग्रुप में सरवाइव करने की हमारी जो मजबूरी है, इसके चलते ग्रुप का रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। हमारे जो केयर टेकर्स हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम पहली बार हकलाते हैं, कुछ बुरा होता है, तो हम अपने माता पिता को ब्लेम नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि माता पिता को हमने ब्लेम कर दिया तो फिर हमारे पास बचेगा क्या। हमारा तो जीवन का आधार माता पिता है। तो कुछ भी गलत होता है तो हम अपने को ही कोसते हैं। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, माता पिता ने बिल्कुल ठीक किया, मैं ही अभागा हूं, ये मेरी ही गलती है। हम अपने आप को ब्लेम करते हैं और किसी को ब्लेम नहीं करते, क्योंकि औरों का सपोर्ट जरूरी है हमारे सरवाइव करने के लिए। और इसीलिए अफ्रीकन ट्राइब्स में ये पाया गया है कि जब वो किसी को मारना होता है तो उसकी गुड़िया बनाते हैं, और गुड़िया में गांव के सब लोग एक एक कील चुभो देते हैं, और वो आदमी कहीं भी हो, 100 किलोमीटर दूर हो, वो मर जाता है। तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि वो कोई जादू नहीं है, बल्कि सिर्फ एक उस आदमी को इस बात का एहसास है कि मेरे कबीले में कोई भी मेरे को सपोर्ट नहीं करता, सब मुझसे नाराज हैं। मैं किसी के भी दरवाजे पे जाऊंगा, कोई मुझे बैठने को भी नहीं बोलेगा। तो ये तिरस्कार, ये रिजेक्शन उस इंसान को मार डालता है, लेकिन उसको वो लोग जादू समझते हैं। तो स्टैमरिंग में भी ऐसे होता है कि हमें जो रिजेक्शन मिला है, और रिजेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे एडोलेसेंट ईयर्स में। जब 17, 18, 19 के हम होते हैं, तब हमें लगता है कि अगर हमारे साथ के लोग हमें सुंदर नहीं कह रहे हैं तो फिर हमारा क्या भविष्य है। अगर हमारे साथ के लोग हमें अट्रैक्टिव नहीं पाते हैं, इंटेलिजेंट नहीं पाते हैं, तो हमारा क्या भविष्य है। हमारी जिंदगी तो अंधकारमय हो जाएगी। तो अपने साथियों की वाहवाही पाने के लिए, उनका अप्रिशिएशन पाने के लिए, हम किसी भी कीमत पे वो पाना चाहेंगे, हम किसी भी सीमा तक जाएंगे। और उसका तरीका यही है कि हम जब हकलाते हैं तो हम अपने आप को दोष देते हैं, साथियों को दोष नहीं देते। हम किसी भी कीमत पे हकलाने को छुपाते हैं ताकि किसी को पता ना चले। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और इस एक्टिविटी को करिएगा। हो सकेगा तो अभी हम करेंगे ब्रेकआउट रूम में जाके। अब जाने के पहले मैं फटाफट एक फीडबैक राउंड करना चाहता हूँ। हाँ संजय, पूछिए, क्या सवाल है आपका। हाँ, नहीं सर, हाँ, सवाल नहीं है। जस्ट मुझे एक चीज ऐड करनी थी इसमें, कि उस वीडियो से मैंने एक चीज देखी कि जो सेम है उसका अल्टरनेटिव है। प प अ, प प्राइड में सेम का अल्टरनेटिव प्राइड है, तो जिसको ऐड करना चाहिए। यस, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू संजय।
तो अभी हम लोग ब्रेकआउट रूम में जा रहे हैं पेयर में। हर ग्रुप में, हर रूम में 2 लोग होंगे और उनको यही रोल प्ले करना है जो अभी मैंने बताया। तो जब आप सीधे हो रहे हैं तो एक पल को महसूस करिए कि मेरे बदन में क्या बदलाव आ रहे हैं, मेरे बदन में क्या पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। जब आप गर्दन ऐसे करते हैं तब क्या होता है, ऐसे करते हैं तब क्या होता है, ऐसे करते हैं तब क्या होता है। जब आप ऊपर देख के स्टैमर करते हैं, मेरा नाम सत्येंद्र है, और जब आप ऐसे करते हैं, मेरा नाम सत्येंद्र है, तो दोनों में क्या फर्क पड़ा, आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है। मतलब बाहर अगले को क्या समझ में आ रहा है उसको छोड़ दो, आप खुद ये महसूस करो कि आपका शरीर कैसा फील हो रहा है जब आप वो पॉस्चर ले रहे हैं। और आप चाहें तो फटाफट वो वीडियो देख सकते हैं, वो 10 मिनट के आसपास वो एक्सरसाइज बता रहा है, आप देख भी सकते हैं। तो मैं टाइम दे रहा हूँ 5-10 मिनट का एक्सरसाइज के लिए। सो लेट अस गोइंग टू ब्रेकआउट रूम एंड या सो तो 2 लोग होंगे हर ग्रुप में, पहले एक करेगा फिर दूसरा करेगा, और देख के एक दूसरे का फीडबैक भी लेंगे। अभी हम लोग कितने लोग हैं, 4 दूना 8 2 10, 10 में से 9 हो गया। किसी एक में शायद 3 लोग भी होंगे, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। ब्रेकआउट रूम ज्वाइन कर लीजिएगा और भाई एक्सरसाइज करिएगा कि पहली बार में आपको हकलाकर बुझ जाने की एक्टिंग करनी है, और फिर सेकंड में आपको पूरी अपना हाइट महसूस करनी है और उसको फील करना है अंदर से। Sir, I'll join room number 4 है, then you हाँ will be बिल्कुल ठीक, आप ज्वाइन करें। ठीक। you will be joining 5 then. हाँ मैं देख लूंगा, मैं 5 में चला जाऊंगा। हाँ जी। या आप ऐसा करो कि आप 4 ज्वाइन कर लो। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक, ओके। Hi, Vikas. Arjun, hi. Hi, so you want to start? Either way, yeah, okay, fine. Yeah. Yes. So basically, we should try to say it with some sort of secondary bodily movements, is it? And then rectify it. Yes. Oh, okay. So, m- myself, uh, 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 Arjun, myself, Arjun. Mm, I did my uh, 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 M, M, uh, MBBS from uh, Bang, Bangalore Medical Co- Co- College. I did my MBBS from Bangalore Medical College. I normally, sort of bow down when I get into a vlog. So I'm just trying to feel that in a slightly different way. And especially on phone calls, because I mean, when I get a few words, my head automatically goes down. I try to consciously raise my chest and my head, but sometimes I keep going back into that old pattern where I bend down. So that is something I'm trying to gradually work on to make it more conscious. Yeah. Nice. You can Yeah, go. yeah, this was good observation. So for me, I have seen this.
Like when I stammer, I usually close my eyes and my lips are usually very tightly held like this, and and stomach is tight as well. So that's what I have seen with my stammering so far. Okay, so let me say it. Uh, my name is Vikas Ranga. My name is V V Vikas Ranga. Yeah, so there's like a lot co confidence feeling if we be straight and like say a word with bouncing or prolongation and having a confidence. Yeah, correct, Vikas. Correct. I think that sort of anticipation comes, that certain words where you may have not said it the way you want to say it, and suddenly that anticipation builds. And see, for me, certain words with H. So when I say something like uh, hematoma, so sometimes I'm not able to get. So I then immediately sort of substitute and say there is a bleed. I don't try to keep continuing with that. So, but that is something that I'm trying to make it more conscious. It's okay to take a pause. I think sometimes in that uh, pressure of the moment, we somehow feel that we need to get it out at first go only. So I think Yeah. it's okay to take some more time, take that extra couple of seconds. Yeah, but those words, yeah. And suddenly when I get that feeling, I feel that my vocal cords just constrict. Like there is no air flowing. Like if I say there is uh, uh, hematoma, my neck drops hematoma. And say there is a hematoma, hematoma. Feel more relaxed and not so tight in the chest or in the cords. And, and as you said, I think maintaining eye contact is one wonderful thing actually. It really helps a lot. Yeah, But yeah, again, on phone call, there is no one to maintain eye contact with. But when I'm sitting in front of, we keep reporting, right? So we sit in front of our Mac. So sometimes I try to see my reflection in the Mac while I'm making a phone call. That also helps sometimes. yeah, 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 yeah. Yeah, maybe we can watch ourselves while we are talking on phone. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Means I feel like the line that you said about consciousness and unconsciousness, it matters a lot. Usually during the day, we are not co-conscious, and that's what I have seen with me. And in that flow only, I stammer, I substitute, but 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 I don't even realize the things are just going on, and I think it's due to unconsciousness. So, this is how we are blessed that we can use this to increase our consciousness. We can Mm.
use our stammering to increase the consciousness. Sir. It's blessing. Yeah. Maybe the one thing that I realized today as well, I was in a meeting, and this was a Google Meet meeting, not physical meeting. And so uh, I was trying to convince the other party on my idea. And I knew that this was quite hard for them to buy this idea. So uh but I realized and they didn't buy that idea as well. And but I gave my best shot though. And but somehow I realized that I was not much RT calculative. I in between I was substituting words as well. And though if I would have, like, thought a bit, written it down, and to say, start with why, why this idea is good for both, and then to share my views one by one, rather than and maybe then when I was sharing, I could have taken poses, and like, I could have shared in relaxed way. And but I was more like just jumped to share, and then I was just sharing. And yeah, that was one of my realization. And maybe on a larger note, I felt that I would have been more conscious. Fantastic, Navikas. I mean, you have learned so much today in that meeting. Yeah. You know much about yourself. It's fantastic. Fantastic, yeah. Great. Fantastic. So next time you go, you will be in a much better sort of position, experientially, not just by reading someone else's experience. Now you have first-hand experience. Nothing can beat that. Yeah. So this will benefit you so much. Yeah. So fantastic, fantastic. So I mean, do you feel that, or do you think that you didn't practice as much because you wanted to finish your sentences or words, and you were not too focused on the content, rather you are more focused on getting the words out smoothly? Was that on your mind? This was one of the factor as well. So anywhere I thought that I can stammer or I can go in a block, and so there was somehow time pressure in the mind as well, that like, not to take much longer poses. And so this was one of the thought. And then I realize, if like, there are such thoughts in the mind, then mind is not having so much free space to think what you want to say, and like, and like,
how your words can add value to the conversation, where you are having this one more thought of saying the words fastly. Correct, 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 correct. Yeah, right. But you're able to, realize all that now, which is fantastic here. Fantastic. Very nice. Yeah, yeah. Yeah. Maybe I mean, I can do more such meetings now like that. yeah, Yeah, yeah. Correct. where I have nothing to lose, as those meetings are we don't have anything at stake there, but I can use those meetings for like practicing well. So, very true, Vikas. Actually, I think sometime in September, I had gone for this Bangalore Toast Masters. Yeah, yeah. So there was one couple who were, I think, in their 60s, and the husband who had become blind. But when he came onto the stage to speak, he spoke so beautifully. When you could make out that he is a seasoned speaker. Then he said, "See, many people think that I have always been like this, speaking very well, but this is not the truth. When I started speaking, going to meetings, talking to clients, I was very nervous. I would get sweaty palms, my mouth would go dry, I could not say anything. And it was only after years of giving that I became more comfortable. So he says, don't expect to first become perfect and then go onto the stage. That will never work out. You will become perfect only by going onto the stage and exposing yourself. So that was wonderful, because we expect sometimes that, okay, let me get more control over my speech, then I will go and give presentation, or I'll go and be a part of meeting. It never works out that way, right? So I think it's, as you also keep saying, you need to accept it, and then that is our practice ground, not sitting in the room and reading. That will never be our practice ground. Yeah, Going out there and failing, until and unless we are prepared to fail and we are okay with it, only then will we enjoy the process. If not, if we are focused only on the end result of being able to communicate well, then I think there will always be that element of fear. yeah, yeah, yeah. Agree. Yeah, we should keep doing that, and then have smile like yours. Yours too. And just on a lighter note, what happened to your ex-girlfriend? Yeah. This meeting is being recorded. Oh, is it? Oh, yes. So on this point, I am co-conscious. Very nice. Very nice. Very nice. Very Yeah. nice. How's things going on? Other It's Otherwise, going on. All good, Vikas. Going on good. Sometimes I don't know. I keep getting these thoughts that see, I'm working and I'm enjoying my work, but sometimes I feel, should no, is this all? It's only 8 hours, 9 hours. I'm enjoying it, but I feel maybe I should be a part of an NGO as well, and be a part of TISA more. And I feel like I want to take. I mean, we all should be able to take TISA to different parts of India. Many places don't have access yeah, at yeah, all.
Yeah. take this. Maybe later on we can also go everywhere. I mean, there should be a worldwide web, like the International Stammering Association, where people can get to learn from one another. And this is a great tool to become more conscious. More important than becoming fluent is to become conscious. So Yeah. I don't know. Sometimes I keep getting these thoughts and I don't know where to start. Yeah. So, yeah, so maybe you can take some lead in TISA in any one of the thing, and you can do it as long as you want to do, and then give that work to someone else. It was supposed to be in. So how do you deal with that? How do you land a joke perfectly? Yeah, people laugh not only on the joke. People laugh at the entire offering, which is the Joker's personality, his reputation. Many stand-up comedians, they've made a name for themselves. Even if they don't say anything, you'll start laughing. So, so there are a lot of variables there. I would recommend you Google Pooja Vijay. She's a stammerer, and she stammers when she's telling the joke, and see how she's doing it. Okay, guys. So now we are back in the main session. I want to invite everyone to quickly share one problem which is holding them back. It can be anything. It can be technical, it can be motivational, it can be anything. So anything which is holding you back from giving your best to TOPG, you have to share. So let me invite Rahul. Rahul, क्या रोक रहा है आपको? सर मैं सबसे पहले तो थैंक यू के ही साथ सर शुरू करूंगा आप के आप सर आप लाइफ में आए तो हमारी तो सबसे पहले तो सर मुझे जो चीज मुझे रोक रही थी वो ये थी कि मैं जो है अपने आप को इस चीज में कि मैं उनसे मैं मान लीजिए मैं मेरा फादर है तो मैं उनसे आँख इसलिए नहीं मिला रहा था कि मैं उनकी इज्जत करता हूँ लेकिन ये जो है ये एक ये एक मतलब एक कायरता के पीछे छुपने का सिर्फ एक वो था कि मैं अपनी अखलाक को उसके भी पीछे लेकर के गया नहीं कि मैं उनसे आंख नहीं मिला तो इसलिए नहीं मिला रहा था कि हालांकि आंख मिलाने का और क्या इज्जत से कोई दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है तो सर ये सब था मेरे साथ। ठीक है, तो आपने थैंक इसका यू। समाधान भी आपने समझ लिया है ना? इसके अलावा और कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है? समय का अभाव ये समस्या तो नहीं है? सर मेरे लिए जो है एक तो सबसे पहला तो सर ये है कि मुझे जल्दी बोलने की जो दिक्कत है सर ये मुझे कहीं ना कहीं रोक रही है और मैंने जब से सर लाउंज ज्वाइन किया है उससे विकास सर से बहुत कुछ सीखने को वहां पर मिला तो अब जो है बहुत स्थिरता आई है सर अब बात करने में अब मैं बहुत पेशेंटली बात करने की कोशिश करता हूँ सर तो थैंक यू सर। थैंक यू राहुल। ये जो फास्ट स्पीकिंग जो है ना, ये एक हैबिट बन जाती है और उसकी ये धीमे धीमे दूर होती, टाइम लगेगा इसमें। मगर खुशी की बात है कि आप ये बात को समझ गए कि मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। आप एक काम और भी करना कि आप यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस हैं, आप उनमें उन वीडियोस को आप कभी कभी 0.75 पे चला के देखो। ऐसे बहुत से वीडियोस हैं जो मैं खुद कई बार ऐसा ही करता हूँ कि कोई इंग्लिश स्पीकर है जो नॉर्मल स्पीड पे अपना बोले चला जा रहा है इंग्लिश में, और मैं उसको समझ भी पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरे को मेहनत करना पड़ रहा है। फिर उसी वीडियो को मैं 0.75 स्पीड पे चलाता हूँ, तो अब मैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ पा रहा हूँ। मैंने कई बार खुद किया ही और ये पाया कि व्हेन वी लिसन टू नेटिव स्पीकर whose मदर टंग इज डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, तो उस समय जो है स्पीड थोड़ा स्लो करने से हमें समझने में आसानी मिलती है।
और यही बात हमारे स्टैमरर के ऊपर भी लागू होती है कि अगर हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर लें तो हमें बोलने में आसानी होगी और सामने वाले को समझने में आसानी होगी। वरना बार बार लोग कहते हैं एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू से, विल यू प्लीज रिपीट इट, कैन यू प्लीज रिपीट इट, एक्सक्यूज मी। वो बार बार एक्सक्यूज मी करते रहते हैं। तो अच्छा है कि अगर हम थोड़ा स्लो डाउन कर ले, हमारे लिए भी आसान, क्योंकि हमारी जुबान को जो है वो 4 जगह जाके छूना होता है। कभी वो दांत के पास जाती है, फिर वो पीछे जाती है, फिर यहाँ जाती है। तो जुबान को मूवमेंट का टाइम मिल जाएगा। हिंदी में एक वर्ड है जो मुझे बचपन में बहुत पसंद था लेकिन मैं बोल नहीं पाता था। वो था किम कर्तव्य विमूढ़। अब मैं बोल पा रहा हूँ। क्योंकि बचपन में जल्दी बोलने की हैबिट थी कि अटक जाता था मैं। और लेकिन मुझे वो शब्द बहुत प्यारा लगता था, मुझे लगता था कितना सुंदर शब्द है। तो इसका मतलब है कि अगर हम अपने आप को स्लो डाउन कर लें तो हमारी जुबान कोई भी शब्द बोल सकती है। प्रॉब्लम जुबान में कमजोरी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक्सरसाइज करो, पहले जुबान से इधर पुश करो, इधर पुश करो, जुबान पे बादाम का तेल लगाओ, तुम्हारी जुबान कमजोर है। मगर जुबान उबान कमजोर नहीं है। बात सिर्फ ये है कि हम जुबान को बहुत कम समय दे रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स मूवमेंट के लिए, है ना। तो ये एकदम सही समझा है आपने, एंड थैंक यू सो मच। नाउ लेट मी इनवाइट रजत। रजत, कोई चीज़ आपको रोक रही है टीओपीजी का बेहतरीन फायदा उठाने में? सर टीओपीजी का बेहतरीन फायदा उठाने में आई थिंक सर अभी जो आपने डिस्कस किया था वो मैंने ये चीज मेरे में देखी है कि दो चीज होती हैं। जब मेरा माइंडसेट स्ट्रांग होता है यानी कि फौजी वाला माइंडसेट कि अब इसको करना है तो अब इसको फिर इसको करना है, तो वहां पे मैं अपने अपनी बात को या अपने जो भी चीज को वहां पे मैं कॉन्फिडेंस के साथ रख पाता हूँ। बट जब मेरा माइंडसेट उतना ज्यादा स्ट्रांग होता नहीं है उस पल पर, तो वहां पे मैं फिर लेक हो जाता हूँ और फिर वहां पे ये जो चीजें आ जाती है मतलब फियर या फिर मेरी जो सेरेनिटी मतलब ये थोड़ा वहां पर लो हो जाता है। तो मतलब जिस चीज के कारण मैं लो फील कर रहा हूँ तो उसका जो इफेक्ट है वो सभी चीजों पर आता है। तो अभी मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि मैं जो भी काम मैं अच्छा कर रहा हूँ तो जब मैं उसमें अच्छा हूँ तो मैं उसको अच्छे से या कॉन्फिडेंस के साथ उसको रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर पा रहा, तो मैं अच्छे से रिप्रेजेंट करने की वो कर रहा हूँ कोशिश कर रहा ठीक है, इसका मतलब आपको अपने माइंडसेट पे ध्यान देना है। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या हर रोज सुबह अपने आप से पूछना है कि ये चीज मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और हूँ। इसके लिए क्या, और इसके लिए, और ये मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, है ना। किसी ने कहा था कि व्हेन गोइंग्स बिकम टफ यू शुड आस्क व्हाई डिड यू बिगिन। तुमने शुरू ही क्यों किया था इस सफर पे? जब तुम्हें मुश्किल लगे तो अपने आप पूछो। मतलब अगर आप मान लीजिए आप कोई बीटेक कर रहे हो और आपको बहुत कठिन लग रहा है, तो अपने आप से पूछो कि व्हाई डिड आई स्टार्ट बीटेक, व्हाई डिड आई नॉट डू बीकॉम। तो अगर मैंने बीटेक कुछ सोच के किया था तो वो सोच आज भी वैलिड है, और इसलिए मुझे चाहे जैसे भी वो मेहनत करके पूरा करना है इस कोर्स को। तो अपने मोटिवेशन को मोटिवेट करने का ये तरीका है कि अपने आप से आदमी पूछे कि इस सफर पर मैं क्यों चला था। आज से 3 साल पहले या 3 महीने पहले मैं क्या सोच रहा था, मैंने क्यों टीओपीजी ज्वाइन किया, तो अब मैं वो समय क्यों नहीं दे रहा हूँ इसको। ठीक है, गुड, वेरी गुड। लेट मी क्विकली गो टू यथार्थ, देन आई विल कम टू संजय। यथार्थ, एनीथिंग होल्डिंग यू बैक? बिकॉज, Uh, हाँ, गो ऑन। yeah. I have some things holding me back. One is procrastination. I leave the things to the weekend. I could be doing a lot of things in the week, but yeah. And one is discipline that if I want to do a thing in a day, sometimes I just say कि I will do it tomorrow. मतलब basically procrastination and a lack of a strong that if I have to do a task today, I will do it today. So that is something. And one is like I still am afraid of what people will think, basically my friends and all. So there's a lack in acceptance part, which is, it can't be learned every day. Uh, यस, yeah, यस। yeah. तो So रिगार्डिंग दैट, हाँ, प्लीज कंप्लीट, गो yeah, ऑन। yeah. So the acceptance part, which I will be learning every day.
Regarding procrastination, I just want to share one thing with everyone. कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम फॉर द होल ह्यूमैनिटी। ये सिर्फ हकलाने वालों की प्रॉब्लम ही नहीं है, बल्कि जो नहीं हकलाते उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। वो चीज़ों को टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। और इसका एक सिंपल सा एक साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन क्या उसे बोलते हैं, पोमोडोरो टेक्निक। बेसिकली उसका मतलब ये है कि 10 मिनट का या 25 मिनट का जो भी अप्रोप्रिएट है वो अलार्म लगा लो, और अपने मन को बोलो कि बस ये 10 मिनट तुम्हें काम करना है, उसके बाद तुम जो मन में आए वो कर लेना। सिर्फ 10 मिनट के लिए तुम फोकस हो जाओ, तुम 10 मिनट के लिए ईमेल का को ड्राफ्ट कर लो, फिर उसके बाद जो मन में आए तुम्हारे वो करते रहना। तो लाइक दिस यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ टू डू दोज थिंग्स। नाउ डेज मैं घर पे हूँ, और घर पे मैं आश्रम में था, तो आश्रम में ध्यान करना बहुत आसान था, हर कोई ध्यान कर रहा था, घंटी बजते ही सब बैठ जाते थे, तो मैं भी जाके बैठ जाता था। अब चूंकि मैं घर पे हूँ, तो वो एक्सटर्नल कंपल्शन नहीं है। इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यही टेक्निक मैं यूज कर रहा हूँ कि मैंने अपने फोन में अलार्म लगाए हुए 10 मिनट के। जैसे यू कैन सी दिस वन, एक अलार्म है 10 मिनट का, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट फोकसिंग ऑन दिस। एक 10 मिनट का है, एक 20 मिनट का है, और एक 40 मिनट का है। तो सुबह जब मैं बहुत बिजी हूँ, नाश्ता भी बनाना है, कोई फोन भी कर रहा है, ऐसे मौके पे मैं 10 मिनट का अलार्म लगाता हूँ, और सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठता हूँ चुपचाप, फिर उठ जाता हूँ, फिर अपने सारे काम करता हूँ। दोपहर में लंच बनाने के बाद थोड़ा टाइम मेरे पास ज़्यादा होता है, तब मैं 40 मिनट का अलार्म लगा लेता हूँ। इसमें ऑलरेडी सारे प्रीसेट यहाँ पे हैं, तो उन पर दबाता हूँ और बैठ जाता हूँ चुपचाप, सब कुछ ऑफ करके। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं कि आप अगर आप ये नियम बना लें कि आई विल नॉट पोस्टपोन थिंग्स टू ए वीकेंड, इंस्टेड आई विल जस्ट सेट ए अलार्म फॉर 5 मिनट, और आई विल जस्ट मेक 2 phone calls विच विल टेक जस्ट 7 minutes राइट नाउ। ठीक है, अगर आप ये कर लें तो आपका वीकेंड चौपट नहीं होगा, आपको वीकेंड तक का वेट नहीं करना है। सो मेक स्मॉल टाइम कमिटमेंट्स दैट आई फॉर जस्ट फॉर 5 minutes आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस बाउंसिंग एंड रिकॉर्ड इट। For just 10 minutes, I'm going to call this person and practice prolongation or pausing. So, as Dr. Amit Bajaj rightly emphasizes again and again, closed-ended practice. Closed-ended का मतलब ही ये है कि you are giving a commitment for a finite practical chunk of time. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. You are not giving commitment of entire life. आप ये नहीं कह रहे कि मैं पूरी जिंदगी प्रोलॉन्ग करता रहूंगा, मैं पूरी जिंदगी बाउंस करता रहूंगा, मैं पूरी जिंदगी स्लो रीडिंग करता रहूंगा। नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा कमिटमेंट आप देना भी चाहेंगे तो आप दे नहीं पाएंगे। देर सवेर आपका दिमाग कहेगा क्या पागलपन है यार, मैं थक गया हूं बाउंस कर करके। तो इसलिए जरूरी है कि यू बार्गेन विद योर माइंड एंड से, डियर ब्रदर, आई नीड योर कोऑपरेशन नॉट फॉर द एंटायर लाइफ, ओनली फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट में अपना काम किया, फिर उठ गया, फिर कुछ और किया। और आजकल मैं यही कर रहा हूँ, और मैं पा रहा हूँ कि इट्स रियली वर्किंग फॉर मी। मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, और इसी तरह से इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। फटाफट ब्रेकफास्ट बनाया, फिर टहलने चले गए, फिर वापस आए, फिर 20 मिनट ध्यान किया, फिर उठ के एक फल खाया, फिर 10 मिनट ध्यान किया। दिन भर में मैं 4-5 सेशन कर पा रहा हूँ ध्यान के, जबकि पहले मॉर्निंग में ध्यान करना भी असंभव था, लेकिन अब मैं कर पा रहा हूँ, और आप भी कर सकते हैं। वेरी सिंपल टेक्निक, मेक इट रूल ऑफ जस्ट 10 minutes, 15 minutes एट द मोस्ट। ओके, नाउ लेट मी गो टू संजय ओझा, देन संजय ओझा, कोई एक चीज जो आपको रोक रही है, वन थिंग विच इज बिकमिंग ए प्रॉब्लम फॉर यू, होल्डिंग यू बैक। नहीं सब पहले तो था, लेकिन अब मैं इंजॉय कर रहा हूँ। पहले तो मैं बस इसलिए कर रहा था कि बस ये एक्टिविटी मैं कर दूँ, शायद इस करने से कुछ मुझे मिल जाएगा, लेकिन अब मैं इंजॉय कर रहा हूँ। बाकी सर वो प्रोक्रास्टिनेशन में मैं ये बोलना चाहता था कि मैं भी बहुत करता था, लेकिन मेरे केस में मैंने देखा है मैं परफेक्शनिज्म बनने के चक्कर में ज़्यादा करता था कि सिचुएशन कब परफेक्ट होगी, वीडियो परफेक्ट बनेगा तो ही बनाऊंगा मैं, वरना नहीं बनाऊंगा। ये मैंने सर ऑब्जर्व किया था। एकदम सही कहा आपने, ये ऑब्सेशन छोड़ दें अगर हम, कि हमें परफेक्ट रिकॉर्डिंग करनी है,
हमें परफेक्ट ईमेल भेजना है, ये हम ऑब्सेशन छोड़ दें तो हमारे सारे काम फटाफट होंगे. ओवर टू ध्रुव. ध्रुव, वन थिंग विच इज होल्डिंग यू बैक. It's also, I think, procrastination, like saying I'll make the videos on the weekend, and then it's Monday and it's Monday evening, and I'm like, oh, I didn't make the videos yet. So yes, yeah, that's all it is. I'm gonna start, like putting it in my calendar now, TOPG tasks at this time, and then just do them. So Thank you, Dhruv. Over to Sanjay Kushwaha. One thing holding you back. यस सर. तो सर मेरे केस में ट्रू टू थिंग्स है. फर्स्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन, सेकंड इज प्रोक्रास्टिनेशन. तो लाइक सेल्फ डिसिप्लिन के लिए मैं एक ऑडियो बुक है कुकू एफएम पर, वो सुन रहा हूँ. एंड उससे लाइक काफी चीजें मुझे सीखने को मिली हैं कि क्यों मेरा सेल्फ डिसिप्लिन लाइक इतना वीक है और किस तरह मैं उसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और उससे मुझे बेनिफिट हो रहा है थोड़ा थोड़ा. ठीक है. वेरी गुड संजय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आप अपनी समस्याओं को खुद हल कर रहे हैं. ये बहुत अच्छी बात है. दिस इज रियली वेरी गुड. ओवर टू अर्जुन. वन थिंग यू होल्डिंग यू बैक. Sir, I think there is nothing as of now, sir. I think I'm just enjoying it. So I don't try to I have no reasons to not be doing it, sir. Very good, Arjun. Thank you so much. Vikas Ranga. Yeah, I think for me, not being conscious throughout the day, and just speaking with the flow unconsciously. That's what I feel. एंड ड्यू टू दैट हो ये रहा है कि जो मैं TOPG में सीख रहा हूँ, मैं उस चीज़ का ज़्यादा फायदा नहीं उठा पा रहा हूँ जितना उठा सकता हूँ. Does anyone know 5 4 3 2 1 technique of mindfulness? रजत को सब पता है. बताओ रजत. बोलो बोलो, बताओ. व्हाट इज इट? सर 5 चीजें मैं क्या देख सकता हूँ, अ, और फिर 4 चीजें, मतलब मैं कौन कौन सी जो ध्वनि है उनको सुन पा रहा हूँ, और 3 चीजें, मैं क्या भी स्पर्श कर पा रहा हूँ, और ठीक है, बिल्कुल अच्छा. या बहुत अच्छा रजत, बहुत अच्छा बताया तुमने. थैंक यू सो मच, बहुत सही बताया. सो बेसिकली दिस इज टेक्निक ऑफ ब्रिंगिंग बैक योर माइंड टू द प्रेजेंट मोमेंट. सो इट्स ए काइंड ऑफ टेक्निक ऑफ माइंडफुलनेस, बिकमिंग मोर माइंडफुल. जैसे आप नाश्ता कर रहे हैं तो अपने आप से पूछिए मैं क्या चबा रहा हूँ. क्योंकि होता ये है कि आप खाते भी जा रहे हैं मगर आपका ध्यान कहीं और है. आप सोच रहे हैं इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे उसको ईमेल भेजना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है. एंड सब कुछ आपने खा भी लिया और आपको इस बात का एहसास भी नहीं था कि आपने दलिया खाया, या दलिया अध पका था या ओवर कुक्ड था, स्वादिष्ट था कि नहीं था, उसमें मीठा कम था ज्यादा था, कुछ एहसास ही नहीं है. तो एवरी नाउ एंड देन यू शुड आस्क योर सेल्फ बट द थ्री थिंग विच आई कैन सी. तो आप अपने आप को कह सकते हैं कि आई एम लुकिंग एट माई लैपटॉप and it has got some smudge on the screen, some dirty finger, you know, impression on the screen. The keyboard is looking dirty. Yeah, the back window is open. I can hear the birds outside. अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे, अभी कल परसों की बात है, मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था और यही मैंने किया कि मैं मॉर्निंग वॉक पे था तो आई वॉज गोइंग ऑन ए मॉर्निंग वॉक बट माई माइंड was dealing with 100 billion things, that I must do this and I've got to do that and I must send that message to so and so
and I must do this. So suddenly I said, I can watch a साल tree. साल का पेड़ मेरे सामने है, रोड कोलतार की है, बगल में खेत है, खेत में गेहूं लगा हुआ है हरा हरा, इधर चरी लगी हुई है, वो खेतों के बीच में एक गाय, सफेद गाय है, वो उसका एक सींग टूटा हुआ है, वो चर रही है। ऐसे मैंने अपने आप से बातें करनी शुरू की कि मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे क्या आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स माई माइंड केम टू द प्रेजेंट मोमेंट। तो ये टेक्निक जो है ये, तो ये अगर हम करेंगे बार बार, तो बार बार आपका दिमाग वापस आ जाएगा, वर्तमान में आ जाएगा। और ये सच बात है कि हमारी इंसान की 99% प्रॉब्लम्स are born in a moment of unconsciousness. When we are unconscious, we are not present in the moment. We respond rudely to someone. We say something hurtful to a child, or to mother, or to wife, or to a client, or to an employee. And then afterwards we say, अरे मैंने ऐसा कैसे कर दिया, and then you feel bad, you have regrets. But all these mistakes are happening just because of one thing: you are not present, you are just not there, you were not even at the crime scene. Yes, sir. और क्राइम हो गया। Hmm. तो so always make it a habit that every now and then you ask yourself, why am I going to market, what do I want to buy? Hmm. Yeah. है ना, मैं हाँ क्या सर। क्या देख रहा हूँ। हाँ, ये बार बार करना है ये। Hmm. There's look, या कौन विकास। one more thing I हम्म, can realize हम्म, on the same lines हम्म, कि जैसा जो आपने बताया ना, हम्म, वो मोर ओवर इस नेचर का है कि एक बार में सिंगल टास्क ही का करना। तो अभी मेरी आ- आदत थोड़ी ज़्यादा मल्टी टास्क करने वाली भी बन गई है। एंड ड्यू टू दैट एक नुकसान ये भी हो जाता है कि जो अपन ने विपश्यना में सीखा था, स्थूल सेंसेशन या स्थूल संवेदनाएं और सूक्ष्म संवेदनाएं। स्थूल वो की जो काफी भारी भारी है, सूक्ष्म वो की काफी छोटी छोटी है। तो हमारा फिर माइंड ऐसे बन जाता है कि जो भारी भारी चीजें हैं सिर्फ वो वाले काम किए जा रहा है, और छोटी छोटी पर ध्यान ध्यान ही नहीं है कि मे भी छोटी ये वाली चीजें हो गई हैं कि जब हम बोल रहे हैं तो माइंड में थॉट्स क्या है, ये वाली काफी छोटी है और इस छोटी की तरफ सोच ही नहीं रहा है। तो मे बी शायद मेरे को एक चीज तो ये करनी चाहिए कि एक बार में एक काम किया जाए ताकि वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही चीजों पर बराबरी का ध्यान हो। बिल्कुल विकास, आप इसको गूगल करना, दो चीज़ों का आप गूगल करके पढ़ना। वन थिंग इज गूगल मल्टीटास्किंग वर्सेस सिंगल टास्किंग। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि मल्टीटास्किंग इज ए जस्ट कन्वेंशनल वर्ड, बट एक्चुअली देयर इज नथिंग लाइक मल्टीटास्किंग। So when we say that I am multitasking, essentially we are doing one thing at a time, then we are switching to something else, doing that for a few seconds, then again we are switching back. Everything is happening even then in a serial order. We are not doing things parallel because human brain is just not capable of doing that. So थोड़ी देर के लिए तुमने गाने के एक दो वर्ड सुने, फिर आपने ईमेल के दो तीन लाइनें लिखी। So actually that is single tasking only. But this switching back and forth of attention is happening very rapidly every few seconds. So therefore it gives the appearance of multitasking. And they say that this switching back and forth of attention in the name of multitasking is not a efficient use of your uh, your your cognitive power, your psychological power and your time. तो उसको थोड़ा गूगल करके पढ़ना कि मल्टीटास्किंग के क्या फ़ायदे हैं, सिंगल टास्किंग में क्या फ़ायदे हैं, हाउ टू डू दिस।
And then I want you to Google another term, which is in Buddhism, they use a lot, skillful action. Skillful action को थोड़ा पढ़ना समझना. And then you can decide, do you still want to do multitasking? Then you may also have to decide, do you have to do everything which is presented to you? तुम्हारे सामने बहुत से काम लोग पेश कर देते होंगे कि बिकॉज यू आर द सीनियर, कि सर आप इसको भी देख लेना, सर आप उसको भी देख लेना. सो एट सम पॉइंट यू मे हैव टू डिसाइड, डू आई रियली नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स, और कैन सम things be dropped? You have to decide your priorities. Agree. Yeah. Okay, so before we wind up, I would invite anyone to share some more thoughts or concluding thoughts or anything, any question or any feedback. My Sir, feedback is this, my feedback is everybody needs to do a lot of more call recordings. फोन कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग और करो, प्रैक्टिस करो, मैंने सबका सुना है, और करने की जरूरत है. टेक्निक्स तभी काम करेंगी जब आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया है उसको. तो दिस इज वेरी क्विक फीडबैक फ्रॉम माय साइड. यस, सो लास्ट कंक्लूडिंग थॉट्स, हु वांट्स टू शेयर? विकास, you were saying something. Rajat raised अच्छा, hand. ओके, यस, गो ऑन रजत. सर मैं ये जब सेशन लास्ट हो रहा है तो इसलिए मैंने आपको याद दिलाने के लिए वो क्या है कि आज हाँ, तो आपको ये याद आ गया तो फिर आप भी बोल दो सर उसे. हाँ, सोनम को बहुत सारी बधाई हम सबकी ओर से. और आप में से कोई भी जो भी दिल्ली में है, उसको फ़ोन करके मैसेज पास ऑन कर देगा कि हम सबकी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए. और so anything concluding, any thought, Dr. Arjun? Sir, सर मैं yeah, please. Sir, I have just one question, sir, is when we are trying to use these techniques, when I make a phone call, when I'm alone, I may be able to use them, sir. But when I'm sitting with a group of people and when I'm making that phone call, then I find it, that is my real challenge, to be able to use it when I'm in a group of people. Congratulations for identifying this subtle point regarding your own practice. Very important. आपने बहुत अच्छा पकड़ा है डॉक्टर साहब आपने इस बात को, कि we need to do this also. When we are phoning, we can invite our wife or brother और जो भी परिवार में हैं, जो भी खाली हैं, कलीग्स हैं, उनको भी बुला के बैठा सकते हैं. And then gradually one day we should really take the courage and make a phone call in a public space and let everyone hear. And after the phone call, if anybody looks surprised, you can say, I was using my techniques here. Sometimes I get stuck on words. Correct, sir. मतलब, sooner or later we have to accept this fact and be very comfortable with that. I mean, even if Narendra Modi asks you, do you stammer? We should be able to say, yes, I stammer. कोई भी Very पूछे, true. कोई भी Very पूछे. Very true, sir. because there's no other way of living at peace with ourselves. और कोई चारा नहीं है. और दूसरी मजेदार बात ये कि if you really study this question, you will find that from their perspective it doesn't really matter. For them it's just a 1 minute news. It's a news only for 1 minute. It is not going in their biography. वो अपनी biography में लिखने नहीं जा रहे हैं कि one day I heard Dr. Srivastava stammering when he was making a phone call. It's never going to make a big news. Nobody is going to write in his story or in his biography, I heard Vikas Ranga is stammering like hell. Nobody will write about us in their stories. हमें लगता है कि हम उनकी मौजूदगी में हकलाएंगे तो वो क्या सोचेंगे, पर सच्ची बात यह है
कि लोग के पास टाइम ही नहीं सोचने का। जैसे विकास ने बोला मल्टीटास्किंग, एवरीबडी इज डाइंग एवरी सेकंड डूइंग द मल्टीटास्किंग। वाइफ ने मार्केटिंग लिस्ट दे रखी है, पेशेंट ने बोला ये भी करना है, बॉस ने ये बोल रखा है, उसने ये बोल रखा है, वो बेचारा पागल घूम रहा है। किसके पास समय है टू रिएक्ट बिकॉज आई स्टैमर? इट्स ओनली आवर ओन सेंसिटिविटी which creates problem for us, and you can deal with that in that way by doing it again and again and again and again. I know one stammerer in Delhi who used to, with a phone, who used to do this in a bus. Every day he used to commute to his office in a very busy packed bus. So in the busy packed bus he will take the phone out, और कोई कॉल भी नहीं आया, कुछ नहीं है. Sometimes phone is just switched off, but still he'll put on the phone and say, अबे हाँ यार राकेश, तू कहाँ है इस समय यार? तू मुझसे मिलने आ सकता ऑफिस में आज? तू ऐसे बातें करता रहता था फोन पे। उसने मुझे खुद बताया कि सर ऐसे करके मैंने अपना फोबिया दूर कर लिया. He did not go to any doctor. This is how he cured his phobia. In bus he will do this, and then after 3-4 weeks he actually started calling people. He will call people on phone only in the bus. And then talk loudly. अबे यार आज हाँ ना यार वहां पे आज कॉफी पियेंगे. एंड देन ही विल लुक कि लोग इम्प्रेस हो रहे हैं कि नहीं. करते 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 ही cured his phobia forever. We all can do this. We just have to keep on doing it. This is called behavioral psychology. Okay, guys, I think it's almost like 10 o'clock. So thank you so much. Everybody is doing very well. But just keep on practicing. Make more phone calls to strangers. Challenge yourself again and again. And as Dr. Arjun identified the area for improvement, in the same way, we all have to do that. We all have to ask ourselves, what is it which still makes me frightened? What is it which still troubles me? ऐसी क्या बात है जो मुझे अभी परेशान करती है? उसको आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर काम करो. दिस इज द ओनली वे. थैंक यू सो मच. डॉक्टर अमित बजाज थोड़ा बिजी हैं जरा, बट ही विल बी ज्वाइनिंग सून, मे बी नेक्स्ट टाइम, बट ही इज ट्रैवलिंग राइट नाउ. सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन. गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ गुड स्लीप. Thank you, sir. Good night, everyone. Thank you. Thank you, sir, and good